ગણપત યુનિવર્સિટીમાં મહેસાણાની પ્રથમ એનજેન પોસ્ટ ઓફિસનો શુભારંભ। મહેસાણામાં હવે પોસ્ટ ઓફિસ એટલે માત્ર ટપાલ કે પાર્સલની સેવા નહીં, પરંતુ યુવાનો માટે ટેકનોલોજી અને આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ એક નવું અનુભવ કેન્દ્ર। ગણપત યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં મહેસાણાની પ્રથમ નેક્સ્ટ જેન એટલે કે એનજેન થીમ આધારિત પોસ્ટ ઓફિસનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। ઉત્તર ગુજરાત પરિક્ષેત્રના પોસ્ટમાસ્ટર જનરલ કૃષ્ણકુમાર યાદવ અને ગણપત યુનિવર્સિટીના ગ્રુપ પ્રોફેસર ચાન્સેલર ડોક્ટર મહેન્દ્ર શર્માના હસ્તે આ નવીન પોસ્ટ ઓફિસનો શુભારંભ થયો। ઇન્ડિયા પોસ્ટની યુવા કેન્દ્રિત પહેલ હેઠળ તૈયાર કરાયેલી આ એનજેન પોસ્ટ ઓફિસને ખાસ વિદ્યાર્થીઓને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે। અહીં પરંપરાગત ડાક સેવાઓની સાથે યુવાનો માટે વાઈફાઈ, કેફેટ એરિયા, મિની લાઇબ્રેરી, કમ્ફર્ટ સીટિંગ અને યુપીઆઈ આધારિત ડિજિટલ પેમેન્ટ જેવી આધુનિક સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ રહેશે। વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્પીડ પોસ્ટ અને પાર્સલ સેવામાં 10% વિશેષ છૂટ, જ્ઞાન પોસ્ટ, આંતરરાષ્ટ્રીય પાર્સલ બુકિંગ, પાર્સલ પેકેજિંગ, ફિલેટલી, પોસ્ટ ઓફિસ બચત સેવાઓ, ડાક જીવન વીમા અને ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંક જેવી સેવાઓ પણ અહીંથી મળશે। ખાસ વાત એ છે કે આ પોસ્ટ ઓફિસની ડિઝાઇનમાં પણ ગણપત યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓએ પણ મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે। એટલે આ પોસ્ટ ઓફિસને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અને વિદ્યાર્થીઓ માટેની ફિલોસોફી પર વિકસાવવામાં આવી છે। ગણપત યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર ચાન્સેલર ડોક્ટર મહેન્દ્ર શર્માએ જણાવ્યું કે આ પહેલથી યુનિવર્સિટીના 18,000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને ડાક વિભાગની આધુનિક સેવાઓનો સીધો લાભ મળશે। સાથે જ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સેમિનાર કોન્ફરન્સમાં આવતા ડેલિગેટ્સ માટે શૈક્ષણિક સામગ્રી દેશ વિદેશમાં મોકલવાનું પણ સરળ બનશે। પોસ્ટમાસ્ટર જનરલ કૃષ્ણકુમાર યાદવે જણાવ્યું કે એનજેન પોસ્ટ ઓફિસનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય નવી પેઢી અને ડિજિટલ નેટિવ્સને ધ્યાનમાં રાખીને ઇન્ડિયા પોસ્ટને વધુ આધુનિક અને યુવા કેન્દ્રિત બનાવવાનો છે। ગુજરાતમાં ગણપત યુનિવર્સિટી સહિત કુલ 6 એનજેન પોસ્ટ ઓફિસ શરૂ થઈ ચૂકી છે। આઈઆઈટી ગાંધીનગર, આઈઆઈએમ અમદાવાદ, એસવીએનઆઈટી સુરત, આનંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી અને કચ્છ યુનિવર્સિટી બાદ હવે ગણપત યુનિવર્સિટીમાં પણ આધુનિક પોસ્ટ ઓફિસનો ઉમેરો થયો છે। અર્થાત મહેસાણામાં હવે પોસ્ટ ઓફિસનું નવું અને આધુનિક રૂપ જોવા મળશે। ટપાલથી લઈને ડિજિટલ પેમેન્ટ સુધીની સુવિધા અને વિદ્યાર્થીઓ માટે અભ્યાસથી લઈને પાર્સલ સેવા સુધીની વ્યવસ્થા ગણપત યુનિવર્સિટીની આ એનજેન પોસ્ટ ઓફિસ યુવાનો અને ડાક વિભાગ વચ્ચેનું નવું કનેક્શન બનશે તેવું કહી શકાય। आज महसाणा के पहले नेक्स्ट जनरेशन पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ गणपत यूनिवर्सिटी पोस्ट ऑफिस कैंपस में किया गया है और ये गुजरात का 6वां जो है एनजेन पोस्ट ऑफिस है। इससे पहले जो है आईआईटी गांधीनगर, आईएम अहमदाबाद, एनआईटी सूरत, कच्छ यूनिवर्सिटी, आनंद यूनिवर्सिटी के बाद ये 6वां यूनिवर्सिटी है जहां पर एनजेन पोस्ट ऑफिस को इस्टेब्लिश किया गया है। इसके पीछे की जो सोच है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है और जिसको हमारे माननीय केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक्सटेंड किया हुआ है कि हमें इसके माध्यम से जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनके माध्यम से पहुंचना है। जो पोस्ट ऑफिस की सेवाएं हैं उससे जो है यूथ को जोड़ना है। और आप इस पोस्ट ऑफिस में देख पाएंगे कि यूथ के लिए हम लोग तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पर कंफर्ट स्पेस उपलब्ध कराया है, उनके लिए जो है कैफेटेरिया उपलब्ध कराया है, उनके लिए वाईफाई की सुविधा है, मिनी लाइब्रेरी की सुविधा है। यहाँ पर इवन यूपीआई आधारित वो पेमेंट कर सकेंगे। पोस्ट ऑफिस की जो भी सेवाएं हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक हो, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हो, फिलेटली हो, ये सभी सेवाएं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। और आज के युवाओं को जोड़ने के लिए ज्ञान पोस्ट, मैगजीन पोस्ट जैसी सेवाएं भी यहाँ के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। टाइम क्या होगा? ये जो डाकघर का जो एज यूजुअल समय है, जो मॉर्निंग से लेकर के शाम तक ये चलेगा। और अगर यहाँ के बच्चों को लगेगा कि इस डाकघर का समय एक्सटेंड करना है तो उस पर भी भारतीय डाक विभाग विचार करेगा। इसके अलावा यहाँ से माइस टाइम की एक नई सुविधा दी जा रही है जिस पर यहाँ के लोग अपनी खुद की जो है फोटोग्राफ अब जो है डाक टिकटों पर देख सकेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा होगा कि डाक टिकटों पर तमाम महान विभूतियों के चित्र होते हैं। कभी महात्मा गांधी जी को देखते हैं, कभी डॉक्टर अम्बेडकर साहब को देखते हैं, कभी दीनदयाल उपाध्याय साहब को देखते हैं। तो अब डाक टिकटों पर आपकी खुद की फोटोग्राफ हो सकती है और उसको आप लगा कर करके पूरे देश के किसी भी कोने में जो है पत्र भी जो है भेज सकते हैं। तो हम लोगों का यही आइडिया है कि यहाँ बच्चे बैठें, अपने इनोवेटिव आइडियाज पर डिस्कस करें और पहले जो चीजें पत्रों के माध्यम से जाती थी उस परंपरा को पुनः जीवंत करते हुए पुनः पत्रों के माध्यम से उन विचारों को पूरे देश और विदेश में जो है प्रेषित करें। यही यहाँ का जो है उद्देश्य है। थैंक यू सर। ये अभी ये जो रक्षा है, रक्षाबंधन के तो हमने अवरोध भेजने का जो आपने शुरू किया, इसके बारे में क्या कहोगे? रक्षाबंधन का समय नजदीक आ गया है। हमारे डाक विभाग ने उसके लिए तमाम तैयारियां किया है।
पहली बात तो चूंकि रक्षाबंधन का समय जो है सावन में आता है और सबसे बड़ी एक संभावना होती है बारिश की, तो हम लोगों ने वाटर प्रूफ जो है डिजाइनर लिफाफे जो है डाकघरों में आरंभ किए हैं, जो मात्र 10 रुपये में उपलब्ध होंगे। उसके अलावा पोस्टेज एक्स्ट्रा होगा। इसके अलावा देश विदेश में चूंकि राखी के लिए तमाम लोग भेजते हैं, और जहां तक गुजरात की बात है, लोग कहते हैं कि गुजरात के तमाम लोग अब्रॉड में रहते हैं, तो बहनें अपने भाइयों को जो राखियां भेजना चाहती हैं विदेशों में भी भेज सकती हैं। और ITPS जो भारत की डाक विभाग की जो इंटरनेशनल मेल की सर्विस है, बहुत वाजिब रेट पर उपलब्ध है, और उसके लिए हम लोग पार्सल पैकेजिंग की भी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। और इस साल जो है हम लोग रक्षाबंधन पर आवश्यकता अनुसार संडे को भी जो है बुकिंग और डिलीवरी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। किसी भी भाई की कलाई सुनी न रहे, ये डाक विभाग का प्रयास रहेगा। और सारी जितनी भी राखियों की बुकिंग होगी स्पीड पोस्ट के माध्यम से, उस पर 10% की जो है छूट जो है सभी लोगों को दी जाएगी। जो है દેશ અને દુનિયાના સમાચાર જોવા માટે અમારી ચેનલ MG લાઈવ ન્યૂઝને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરો, જેથી રોજે રોજની અપડેટ આપને મળતી રહે। સાથે જ અમારું ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજને પણ ફોલો કરો।